Everyone, welcome back. Now in previous videos we have seen the two numericals based on radiation. So this is the third numerical that we are going to discuss here. As I have already told you, these numericals are easy if you remember the formulas. So let us see this numerical. First we will read this numerical. Now what is given in the numerical? See, calculate radiation resistance of a broadcast antenna. That means आपको रेडिएशन रेजिस्टेंस निकालना है, यानी R सफिक्स RED आपको निकालना है. तो रेडिएशन रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना विथ 30 मीटर हाई, यानी 30 मीटर हाई, इसका मतलब दिस इज लेंथ ऑफ एंटीना इज गिवन टू यू. तो लेंथ ऑफ एंटीना इज 30 मीटर. वो गिवन डेटा में मैं कलेक्ट कर लेता हूँ. बेस फेड विथ अ वर्टिकल कंडक्टर over a perfectly conducting ground at a frequency of 500 kilohertz, and frequency is given to you 500 kilohertz. तो as the frequency is given to you, इस चैप्टर में जब भी आपको फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, सबसे पहले आपको लैम्बडा की वैल्यू, लैम्बडा इज नथिंग बट योर वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, क्योंकि इस लैम्बडा की वैल्यू आपका रेडिएशन रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला रहेगा आर रेडिएशन, उसमें आपको जरूरत पड़ने वाली है. आफ्टर अ शॉर्ट टाइम वी विल सी द फॉर्मूला ऑफ द रेडिएशन रेजिस्टेंस, राइट. उसमें आप देखोगे कि रेडिएशन रेजिस्टेंस इज डिपेंडेंट ऑन द लैम्बडा. सो दैट्स व्हाई यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लैम्बडा. तो लैम्बडा आपको पता है वेवलेंथ इज ऑलवेज v डिवाइडेड बाय f, और यू कैन से इट इज लैम्बडा इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय f आल्सो. You can write down in this term also, where c is nothing but the velocity of light and f is nothing but the frequency. तो यहाँ पे भी v डिवाइडेड बाय f लिया हुआ है, इसको रीड वैसे ही करना है, v डिवाइडेड बाय f. v is the velocity of light and divided by the frequency of the signal. तो now v की वैल्यू as I have told you, this is 3 into 10 raised to power 8 पुट कर दिया है, और फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 500 किलोहर्ट्ज. तो 500 into 10 to the power 3, so this will become 500 kilohertz. So if I will calculate, this lambda value is coming to be 600 meters, right? That is wavelength is 600 meters. Now in this problem the length of the antenna is given, but in the formula of radiation resistance you will require the effective length, right? You will require the effective length. ये effective length क्या है, ऑलरेडी हमने थ्योरी में देखा हुआ है. तो यहाँ पे अगर आपको इफेक्टिव लेंथ अगर लगता है, तो इफेक्टिव लेंथ का फॉर्मूला, द इफेक्टिव लेंथ कैन बी गिवन इन टर्म्स ऑफ द लेंथ ऑफ द एंटीना इज 2 डिवाइडेड बाय पाई इनटू एल. सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इफेक्टिव लेंथ, 2 divided by pi into L. So I will put the value of EL here. So 2 divided by pi into 30. 30 is the length of the antenna. So effective length is coming to be 19.09 meters. So this will be the effective length. So in this slide we have calculated the wavelength as well as we have calculated the effective length. Why we have calculated this value? Because these two values will be required in the formula of radiation resistance. So now let us see the formula for the radiation resistance. We will put the values and we will calculate the radiation resistance. So the radiation resistance is given by C 160 pi square L effective divided by lambda whole square. This is the formula for the radiation resistance for an antenna. So 160 into pi square, it is the constant. तो जैसे कि वैसे मैंने यहाँ पे रख दिया. L इफेक्टिव की वैल्यू जैसे कि मैंने बोला था कि L इफेक्टिव लगने वाला है, तो L इफेक्टिव हमने कैलकुलेट किया था 19.09. You can see from this slide 19.09. And we will put the lambda value. Lambda is 600 meters. तो यहाँ पे lambda की वैल्यू जो है वो 600 meters मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, और जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा कैलकुलेटर से, so this resistance, radiation resistance is coming to be 1.598 ohms, right? So once you will remember the expression for the radiation resistance, then total power radiated, effective length, wavelength, इसके अगर आपको फॉर्मूलेज याद है तो यू कैन इजीली सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस रेडिएशन. तो होप आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम समझ में आया होगा. नहीं समझा है तो फिर से रिवाइज करो, रिपीट करो, ठीक है? तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. नथिंग न्यू हियर इन दिस केस, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, पुट द वैल्यूज एंड यू आर गोइंग टू गेट द आंसर, राइट? सो होप आपको समझ में आया होगा. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू वेरी मच.